बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। 3 नवंबर को ये रिलीज हुआ है और आज 4 नवंबर को आपके पास इसकी वीडियो मौजूद है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक तो पेपर पैटर्न को समझने में, दूसरा जो चेंजिंग्स आई हैं पेपर पैटर्न में और क्वेश्चंस में वो समझने में, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सोल्यूशन चाहिए, तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपके पास हाजिर है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एमसीक्यूज इस बार 20 नंबर के ही हैं। कुछ लोग इस बात पर इसरार कर रहे थे कि इस बार भी 40 नंबर के ही होंगे, तो 20 नंबर की है ये एमसीक्यूज, ये बात वाजे हो चुकी है। एमसीक्यूज देख लेते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, होम, कॉन्शियंस, वेल्थ, फ्रेंड्स. For 30 pence her savior was sold is a line from this poem. Ozymandias, the character of a happy life. Lucy Gray, the abbot of Canterbury. In the line, when he might have captured the victor's cup, the highlighted phrase is metaphorically used for prize, failure, success, trophy. यहाँ पे इसको जो है हाईलाइट तो नहीं किया हुआ, लेकिन जो फ्रेज है वो बेसिकली विक्टर्स कप है। तो इसके आंसर्स देखें। This is a strong retreat for a truly happy man according to the poem The Character of a Happy Life, Conscience. सेकेंड का आंसर है द एबट ऑफ कैंटरबरी, और द विक्टर्स कप के लिए जो मेटाफोरिकली जो वर्ड फ्रेज यूज किया गया वो सक्सेस के लिए यूज किया गया है, सामने आपके मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के प्रोज के तमाम तरह एमसीक्यूज न्यू बुक के मुताबिक आप देख सकें, सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो उसकी जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको स्क्रीन के टॉप राइट पर इस वक्त शो हो रहा है, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हैं। अभी सारी चैप्टर्स की तो वीडियोस नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में सारे चैप्टर्स की वीडियोस आ जाएंगी। Boundless and bare is an example of this poetic device: oxymoron, onomatopoeia, metaphor, alliteration. Khahoris follow the spiritual path and symbolize the search of serpents, dreams, herbs, reality. The central character in the play A Visit to a Small Planet is John Randolph. Randolph है ये. Roger Spalding, Creton, Alan. Creton thought that the views of John about Alan are red, purple, yellow, pink. Creton considered human civilization as modern, primitive, conservative, progressive. The word folk means children, man, women, people. Roger Spalding wants to be the first journalist to interview general powers Creton, Alan and John. देख लें इसके राइट आंसर्स यहां पर हैं। बाउंडलेस एंड बेयर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस पोएटिक डिवाइस, alliteration. Coyotes follow the spiritual path and symbolize the search of reality. The central character in the play A Visit to a Planet is Creton. Creton thought that the views of John about Alan are purple. Creton considered human civilization as primitive. The word folk means people. Roger Spalding wants to be the first journalist to interview Creton. A.B. White revisited the lake with his son in summer, winter, autumn, spring. Method seemed happiest when she received the invitation, danced in the party, bought a new dress, borrowed the necklace. According to the author of Ralph Waldo, envy is bliss, evil, suicide, ignorance. During World War II, transmission of information was in the form of material, electric, analog, catalog. A group of people traveling together is called as sages. Crew, caravan, shrewd man. The cleaning staff dash infected the area to avoid the spread of coronavirus. Identify the correct prefix. तो इसके आंसर्स देखते हैं। A.B. White revisited the lake with his son in summer. Method seemed happiest when she danced in the party. ये जो आपके पास मॉडल पेपर आया उसके अंदर गलत इसका जवाब लिखा हुआ था, तो इसका राइट आंसर है dance in the party. According to the author Ralph Waldo, envy is ignorance. During the World War II, transmission of information was in the form of analog. A group of people traveling together is called as caravan. The cleaning staff infected the area to avoid the spread of coronavirus. इसके अंदर obvious सी बात है, जो राइट आंसर है वो क्या होगा? disinfected होगा, जो सही प्रीफिक्स है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फर्स्ट ईयर की पोएम्स के तमाम पोएम्स के न्यू बुक के मुताबिक जो एमसीक्यूज हैं वो देख सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन शो हो रहा है, आप उसे क्लिक करके
उन तमाम तरह वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं. In the sentence, there is a large demand all over the United States for plant indigenous to the desert. The word indigenous means native, necessary, foreign, alien. In the sentence, he runs fast. The underlined verb is transitive, intransitive, auxiliary modal. In the sentence, I run a business successfully. The underlined verb is transitive, intransitive, auxiliary modal. The comparative degree of the word little is littler, more little, less, more less. अच्छा, इसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है रन्स, और अगले वाले में भी रन ही है. तो इसके आंसर्स देख लेते हैं कि इसके आंसर्स व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स. हियर यू गो. 17 का आंसर है नेटिव, 18 का आंसर है इंट्रांजिटिव, 19 का आंसर है ट्रांजिटिव, और जो आपके पास 20 है उसका आंसर है लेस. क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं. क्वेश्चन आंसर्स का भी पैटर्न वही है कि आपके पास जो 3 सेक्शन है, एक आपके पास प्रोज सेक्शन का है, एक आपके पास पोइट्री का है, एक आपके पास प्ले का है. तो पहले इन्होंने प्रोज में वही 4 क्वेश्चंस डाले हैं, और लिटरेचर से हर सेक्शन में जो है 4 सवालात होंगे. सब सेक्शन नहीं है, सेक्शन है, सब सेक्शन ही है, सॉरी. तो इसके अंदर देखें, पहला क्वेश्चन है विच इज द ग्रेट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म, एक्सप्लेन. What are the benefits of e-commerce in today's world? What mistake did Stephen Leacock make when he wrote the check? Why should you choose a career that interests you? इन सब के आंसर्स देखते हैं अगली स्लाइड में. Which is the greatest curse according to the Qaeda-Azam? Explain. The Qaeda-Azam made a presidential address to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly. Addressing to the members of the assembly, he told that one of the biggest curses from which India is suffering is bribery and corruption, which is a poison for our society. It destroys the administrative structure and system and slows down the progress of the nation. Therefore, it must be dealt with an iron hand, and an adequate measure must be taken to eliminate this evil. Next question है, what are the benefits of e-commerce in today's world? ई कॉमर्स, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से शॉर्ट करके ई कॉमर्स है. तो ये जो है इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, primarily the internet. The benefits of e-commerce include its round-the-clock availability, the speed of access, the wide availability of goods and services, easy accessibility, and international reach. Customers shopping a physical store may have difficulty locating a particular product. What mistake did Stephen Leacock make when he wrote the check? Among all the stupid mistakes, the most hilarious mistake was the withdrawal of check. The author made a mistake when he wrote it. He wanted to take out just $6 for his present uses, but he wrote $56 instead of 6, as he was so much confused and he did not know what he was writing. The moment he was writing the check, the whole bank seemed to swim before his eyes. In such a situation, he was bound to commit mistakes. Why should you choose a career that interests you? Choosing career is one of the most important decisions you will make in life. It is about so much more than deciding what you will do to make a living. For choosing a career, one must make sure that it interests him, something which brings him satisfaction and happiness. He will be more successful, fulfilled, and productive if he is enthusiastic about his chosen path. He will also do a better job and are more likely to be promoted. Interest are what you like to do at work. You can choose a career based on your interest. Poetry section आ गए. Poetry section का पहला question है, discuss the poem The Character of Happy Life with reference to the line and having nothing yet hath all. So Henry Wotton's happy man having nothing yet hath all. In fact, all that a man needs in the world is peace of mind and spiritual contentment. Wotton's happy man has all those qualities that make him happy and contented. He does not act according to others' will. He is a master of his soul and does not envy anyone. He never wishes material wealth and does not run after worldly success. Therefore, he has no material wealth, but he has a spiritual and mental contentment that a man truly needs for a happy life. अगर आप ये चाहते हैं कि जो प्ले है, A Visit to a Planet,
उसके एमसीक्यूज भी आप देखना चाहते हैं तो उस प्ले के एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन इस वक्त शो हो रहा है उसमें मौजूद है, वहां से आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जो कि लेटर ऑन अपलोड हो जाएगा. What irony has been presented in the poem Ozymandias? The proud Ozymandias, the king of Egypt, had got written at the pedestal of the statue, "My name is Ozymandias, king of kings, look on my works, ye mighty and despair." But the irony is that the king's statue was lying in the sands. He got a statue built to immortalize his name, but he forgot that nothing is immortal. The desert buried the pride, arrogance, vanity, and ego of Ozymandias. The only thing left there was the lesson for others, pride hath a fall. What reward does a Kahori get after his hard work? The Kahoris give up the pleasures of the world, ignore their physical well-being for the sake of spiritual prosperity, and devote themselves in the search of the truth. Save themselves from ignorance and find God. Their encounter with spirituality and God causes their illumination of the truth, which is their reward. अच्छा, फिर ये स्टैंजा देके कहा है कि भाई पोइट पहचाने और बताएं कि कौन कौन सी इसमें पोइटिक डिवाइसेस आई हैं. ऐसा फेडरल बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आता है, वहीं से गालबन लिया गया है इसको. द नेम ऑफ द पोएम इज गुड टिम्बर. गुड टिम्बर से है ये. Skillfully composed by Douglas Mallock. The poet has artfully compared good timber with good man. He believes that it is not easy for both timber and man to become good without going through hard times. The poetic devices that has been used in the mentioned lines are hyperbole and alliteration. Has इसमें से गायब है. And they hold counsel with the stars is an example of hyperbole. Of many winds and much strife is the example of alliteration. Why was Creton interested in visiting the planet Earth? Creton visits Earth just as a tourist because Earth is Creton's subject of interest. He has been studying it for years as a hobby, particularly this period. He has all the information about it. He tells general powers that his interest is in human beings and their behavior. He declares that he has come to Earth for everlasting visit. As the play proceeds, he tells general powers that he will take the charge of the whole world and intends to reform it. Describe the reactions of different characters to the Creton's visit. The flying saucer is a spaceship of Creton that lands in the rose garden of Mrs. Roger Spalding near her house. The flying saucer is a shining object not larger than the size of a car. It is elliptical with a 14-foot diameter. Mrs. Spalding fears that it might fall on her house, and Mr. Spalding thinks it might be a meteor, optical illusion, or weather balloon. Mr. Spalding is reluctant to accept that it is a spaceship of any alien. अच्छा, ये जवाब थोड़ा सा जो है मॉडिफाई होना था, ये ऐसे ही जो है पेस्ट हो गया है. इसके अंदर जो है आप मिसेस स्पेल्डिंग वाली लाइन, जो थर्ड लाइन है, वहां से आप इसे लिख सकते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन और होगी. सॉरी फॉर दिस. इसका सही जवाब जो है मैं अपलोड कर दूंगा लेटर ऑन, या मैं कमेंट में इसको पेस्ट कर दूंगा. How is media portrayed in the play? In the play, A Visit to a Planet, media is depicted as a tool to create and control general public opinion. It is not free and is controlled by authorities. Like the public doubts about the flying object are negated and general powers views are propagated, which boast American supremacy over everything. Moreover, he restricted Mr. Spalding to take the interview from Creton in his broadcast. That shows media is not completely free. Which character in the play A Visit to a Small Planet do you like most and why? Creton is my favorite character in the play A Visit to a Planet. He is an alien from another planet. Despite having incredible supernatural powers, he is very polite, gentle, and well-mannered. He answers all the questions of general powers good-humoredly. Although the general speaks to him in a very discourteous way, he does not sound patronizing while commenting on the progress of the people on the earth, has made and does not cause any harm. अच्छा, सेक्शन 4 में ग्रामर. अब ग्रामर थोड़ी चेंज होकर आ रही है. पहले आपके पास जो है मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने होते थे. मिस्टेक आइडेंटिफाई करने वाले जो है क्वेश्चन अभी भी है, लेकिन इसके अंदर एडिशन हो गई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की और वॉइस की.
एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच इज न्यू फॉर फर्स्ट ईयर सिलेबस। तो ऑब्वियसली बात है सेशन में इसको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। The manager said to the customer, "Get out of my office." The manager ordered the customer to get out of his office. He said, "The earth is round." He said that the earth is round. Raza said, "I must arrange a couple of things." Raza said that he had to arrange a couple of things. अगर ये आपको नहीं आते तो ऑब्वियसली बात है आपको क्लास में इसको सीखना पड़ेगा। ये सिर्फ सोल्यूशन है, अगर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज टॉक टू योर टीचर, लर्न दिस टॉपिक एंड यूल कम टू नो कि ये सब चीजें कैसी चेंज हुई हैं। तो ये आंसर्स आपके पास आ गए हैं, और अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसे पॉज करके आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। वॉइस में हमारे पास जो है ये कुछ सेंटेंसेस हैं। He has to purchase a car has to be purchased by him. Let her write a poem, let a poem be written by her. Why did you help her? Why was she helped by you? Who did this? By whom was this done? Someone killed the criminal was killed. ये टॉपिक हम ट्रांसलेशन के लिए पढ़ाया करते थे, लेकिन इस बार जो है इसका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनकर आया हुआ है, तो इसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। उसके बाद ये आ गया आपके पास क्वेश्चन जिसके अंदर आपने एरर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उसको करेक्ट भी करना है। वो एरर वर्ब का भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी हो सकता है, आर्टिकल का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही डज हिज होमवर्क एट द आफ्टरनून, हमें पता है एट द नहीं, इन द आफ्टरनून होता है। द लैम्प विल बी लिट ऑन 8 PM, तो ये जो है आपको पता है ऑन नहीं आएगा, एट आएगा। शी क्लीन हर रूम एवरी डे, तो आपको पता है क्लीन्स होना चाहिए ये। दे हैव मेक अ केक, हैव लगा हुआ है तो मेड होना चाहिए। माई बेड इज मोर बिग देन माई डेस्क, तो ये मोर बिग नहीं, बिगर होना चाहिए। अच्छा, डू इज डायरेक्टेड, ये नई चीज आ गई है, ये 9-10 में हुआ करती थी, अब ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में भी डू इज डायरेक्टेड का 5 नंबर का क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें पंक्चुएशन भी इंक्लूड कर दी है। पंक्चुएशन ऑन एंड ऑफ हमारे सिलेबस में रही है, पहले वाले पैटर्न में थी, फिर आई, फिर चली गई, अब दोबारा इसको इंक्लूड कर दिया गया है। अब आपके पास पहला सेंटेंस है, डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल, डायरेक्ट स्पीच है, तो ये कुछ इस तरह से पंक्चुएट होगा, आपके सामने है। अगला कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 2 का, इफ आई वर यू। अब आप इसको किसी भी तरह के सेंटेंस से कंप्लीट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होना चाहिए। मैंने लिखा है आई वुड नॉट डू सो। माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, आपने यूजुअली को राइट प्लेस पे यूज करना है, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट के बाद आएगा यूजुअली। He could not win a scholarship, he is careless, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना था तो हमने बिकॉज लगा के इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। उसके बाद मोडल वर्ब लगाना था, तो यू विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो हमने इसमें ऑट टू लगा लिया है। अगर आप शुड भी लगा देते तो उससे भी बात बन जाती। सेक्शन सी है, सेक्शन सी को मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां पर आपके पास क्वेश्चन आया है, या तो फिर आप इसको क्वेश्चंस को आंसर करें, पैसेज कॉम्प्रहेंशन है आपके पास, या फिर प्रेशर राइटिंग करें। मैंने दोनों को आंसर कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कॉम्प्रहेंशन को जो है पैसेज कॉम्प्रहेंशन के आंसर्स जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन में उसकी मैंने प्रेशर राइटिंग कर दी है, ये भी देख लीजिएगा आप। और ये सारी की सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन से रिलेट करती हैं, और प्रेशर राइटिंग और पैसेज कॉम्प्रहेंशन फर्स्ट ईयर के पेपर में न्यू है, ये पहले वाले में नहीं थे। फिर रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग भी फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड की गई है, वरना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये था ही नहीं कभी। जो फेडरल बोर्ड की इंटरमीडिएट क्लासेस हैं उसके अंदर इंग्लिश में करवाए जाते हैं, तो इसको इंक्लूड किया गया है, इसको भी सॉल्व किया है। क्वेश्चन को इसको देख लीजिएगा पॉज करने के बाद। डिटेल में तो ये आपका टीचर आपको इंशाल्लाह ताला क्लास में समझा देगा। उसके बाद ईमेल राइटिंग के लिए भी जो है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये हमारी बुक में मौजूद है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसको मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया है, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा एंड यू विल गेट द इनसाइट कि इसको कैसे लिखना है। वैसे सब बुक में मौजूद है एंड ऑब्वियसली टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे डाल दिया, पहले पैराग्राफ राइटिंग होती थी और इसके अंदर जो है पैराग्राफ राइटिंग डाल दी है, और सॉरी ऐसे राइटिंग डाल दी है। अच्छा, एक बात जो मैं बताना भूल गया, मुझे अर्ली ऑन बताना था लेकिन रह गई बात।
वो ये है कि नोट्स अवेलेबल हैं कंप्लीट फर्स्ट ईयर के, तो जिसको भी चाहिए हो वो कमेंट करे, उसको बता दिया जाएगा कि हाउ टू गेट द सेट ऑफ नोट्स। तो जी चलते हैं ऐसे की तरफ, उसके बाद अपनी वीडियो को निपटाएंगे। ये पहले एक क्वेश्चन था कि भाई नैरेटिव अकाउंट को बताएं जिसने आपकी जिंदगी को बड़ा इन्फ्लुएंस किया हो, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। और उसके बाद जो है हम जाएंगे ऐसे की तरफ, ऐसे के सोल्यूशन आपको मिलेगा। लाजमी सी बात है आपको स्क्रीन को पॉज करके ही इन तमाम तरह चीजों को नोट डाउन करना होगा इफ यू वांट टू कॉपी डाउन। सो हियर इज द कंप्लीट ऐसे एंड दैट्स द कंक्लूजन। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।